Good evening, you're watching the prime time on Hornbilltv. Let's have a look at the news headlines. Authorities in Imphal West District have reimposed a curfew starting at 4:30 a.m. on Saturday until further notice due to the prevailing law and order situation in the district. Kachar Police Administration has on Saturday handed over the bodies of 10 Kuki militants lodged in Silchar Medical College and Hospital morgue since 12 November to the Manipur Police authorities. In a major operation against left-wing extremism, 5 Naxalites were killed and 2 security personnel were injured during an intense encounter in the dense forest of Abuj Mad, located at the Kanker-Narayanpur border in Bastar, Chhattisgarh. Prime Minister Narendra Modi has embarked on a 5-day visit to Nigeria, Brazil and Guyana today. In his departure statement, the Prime Minister said that this will be his first visit to Nigeria, which is India's close partner in the West African region. At least 10 newborn babies died due to burns and suffocation in a devastating fire in the neonatal intensive care unit of Maharani Lakshmibai Medical College in Uttar Pradesh's Jhansi late on Friday night. Let's have a look at the news in detail. As the news of 6 dead bodies found floating in Jirimukh, a confluence of Jiri and Barak River, came out, suggesting that they belong to the 6 hostages kidnapped by Kuki militants on 11th November last. Kachar Police Administration made arrangements for the handing of 10 Kuki militants lodged in Silchar Medical College and Hospital morgue since 12th November to the Manipur Police authorities. Members of Kuki and Hamar communities have been camping outside Silchar's morgue since 12th November to take possession of the dead bodies. On Saturday morning, as the news came out that the dead bodies of these 10 Kuki militants, which these tribal folks regard as village defense volunteers, were to be handed over to Manipur Police, hundreds of them gathered once again, as the Kachar police team in the presence of magistrate tried to make those gathered understand that it was within the Manipur Police authorities' jurisdiction. A war of words broke out, leading to the Kachar police team carry out lathi charge, which the protesters retaliated by pelting stones at the police force. In this melee, 4 journalists of Silchar also got hurt. Later, SP Kachar Numal Magatta and DIG Kankan Jyoti Saikia warned the protesters of lawful action if they resort to violence of any form. Later, the situation was brought under control as protesters agreed to conduct a small ritual in the premises of the SMCH morgue and hand over the bodies to the Manipur police team. The dead bodies would be airlifted from Assam Rifles base in Masimpur military station and taken to Churchandpur district of Manipur, as we report. SP Kachar Numal Mahata said a misunderstanding cropped up with the agitators who are emotionally attached to the deaths of these 10 Kuki youths. He said that they have ensured that this is a matter of Manipur and no fallout should take place in the Kachar district of Assam. देखिए आई एम एसपी हिज डीआईजी वी हैव कम हियर आप लोगों को 3-4 दिन आप लोगों का ऑनर किया आप लोगों के सेंटीमेंट को समझा हमारा पुलिस को आप लोग अभी पत्थर मार रहे हैं दिस इज वेरी बैड थिंग
কৰিবলৈ লওঁতে মানে তেওঁলোকক ইয়াৰ পৰা লোৱাৰ সামনে তেওঁলোকে এটা বুজাবুজি হৈছিলে, ভুল বুজাবুজি এটা হৈছিলে। তাৰপাছত আমি আহি উপস্থিত হৈ তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিছোঁ আৰু ৰাইজে তেওঁলোকৰ কিছু ক'বলগীয়া আছিলে আমি শুনিছোঁ। তাৰপাছত আমি এতিয়া বৰ্তমান আমি ডেড বডিসমূহ আমি ইয়াৰ পৰা উলিয়াই পঠাইছোঁ আৰু ইয়াত এয়াৰলিফ্ট কৰি তেওঁলোকৰ গন্তব্যস্থানলৈ লৈ যোৱা হ'ব। 5 দিনৰ পৰা এইবিলাক আছিলে। হয়, ইয়াত আছিলে, আপোনালোকে গম পাইছে যে ইয়াত বহুতো লোক আছিলে, ইয়াত বহুত লোকৰ সমাগম হৈ আছিলে। গতিকে এতিয়া আমি তেওঁলোকক সকলোকে অনুৰোধ কৰিছোঁ তেওঁলোকে নিজৰ ঘৰা ঘৰি হ'ব লাগে, কাৰণ এইটো হ'ল মানে অসমৰ কাছাৰ জিলা আৰু ইয়াত হ'ল তেওঁলোকে এটা ইয়াত পষ্টমৰ্টেমৰ কাৰণে তেওঁলোকে বডিসমূহ ইয়াত আনিছিলে তেওঁলোকৰ সুবিধাৰ্থে, আৰু এতিয়া তেওঁলোকে পষ্টমৰ্টেম কৰাৰ পাছত সেইবিলাক গন্তব্যস্থানলৈ তেওঁলোকে লৈ গৈছে। বৰ্তমানলৈকে 10টা গৈছে। আচ্ছা, কাইলৈ 3টা ডেড বডি ৰিকভাৰী হৈছিলে, আজি আকৌ 3টা হৈছে নি? চাওক, বাকী কথা মই ক'ব নোৱাৰোঁ, কিন্তু এতিয়া আমাৰ যিখিনি ইয়াত যোৱা 5 দিন ধৰি আছিলে, এতিয়া সেইখিনি মানুহখিনিৰ লগত আমি কথা বতৰা পতাৰ পাছত এতিয়া তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা ঘৰা ঘৰি হ'বলৈ তেওঁলোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু ডেড বডিসমূহ আমি তেওঁলোকৰ পৰিয়ালবৰ্গই যাতে লাভ কৰে তাৰ কাৰণে গন্তব্যস্থানলৈ আমি ইয়াৰ পৰা মণিপুৰ আৰক্ষীয়ে তাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু সেই এয়াৰলিফ্ট কৰি ইয়াৰ পৰা লৈ যোৱা হৈছে। ইয়াৰ কমিউনিটিক কি কৈছে আপুনি যিটো কাৰণে এইবিলাকে উঠাই দিলে? চাওক, এই কথাটো আমি ক'ব নোৱাৰোঁ, কাৰণ আমাৰ কথাটো হ'ল যে আমি ইয়াত আইন শৃংখলাজনিত পৰিৱেশৰ কাৰণে আছোঁ আৰু গোটেই বিষয়টো হ'ল যে মণিপুৰ আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকৰ যিসমূহ মানে ইনজিউৰ্ড পাৰ্চন আৰু যিসকল মৃত ব্যক্তি তেওঁলোকক ইয়াত পষ্টমৰ্টেমৰ কাৰণে লৈ আহিছিলে। আমি আইন শৃংখলাজনিত কাৰণে আমি যিহেতুকে এইটো আমাৰ ইয়াত আৰু আমাৰ ইয়াত সকলো যিসকল লোক আছে সকলো লোকে ইয়াত মানে আমাক সহযোগ কৰিছে, কিন্তু ইয়াত কোনো ধৰণৰ আইন শৃংখলা পৰিস্থিতি যাতে কোনেও সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে আমি তেওঁলোকক সকলোকে আমি কৈ দিছোঁ যে ইয়াত কোনো ধৰণৰ মানে বহিৰাজ্যৰ বিষয় লৈ পেলাই ইয়াত কোনো ধৰণৰ যদি আইন শৃংখলা পৰিস্থিতি নহয় তাৰ কাৰণে আমি সকলোকে কৈ দিছোঁ আৰু তেওঁলোকেও ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ বডিসমূহ লৈ যাবলৈ ইয়াৰ পৰা আমি লৈ গৈছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ যি গন্তব্য স্থান আছে, যি পৰিয়ালবৰ্গ আছে তালৈ বডিসমূহ লৈ যাব। মেডিকেল কলেজত এতিয়া চিটুৱেশ্যন নাই, এতিয়া বৰ্তমান পৰিস্থিতি সম্পূৰ্ণ নিয়ন্ত্ৰণহীন, সম্পূৰ্ণ শান্তিপূৰ্ণভাৱে আছে, এতিয়া কোনো ধৰণৰ নাই। প্ৰথমে যি ৰাইজ ইয়াত গোট খাইছিলে তেওঁলোকৰ এটা ভুল বুজাবুজি হৈছিলে, বাট তেওঁলোকক যেতিয়া আমি কথা পাতিলোঁ তাৰপাছত তেওঁলোকে সকলো কথাখিনি বুজি পাইছে। চাওক, আমি কোনো পৰিস্থিতিত আমাৰ এটা একেবাৰে পৰিষ্কাৰ কথা যে অসমত কোনো ধৰণৰ আইন শৃংখলা পৰিস্থিতি কাছাৰ জিলাত আমি কোনো গোষ্ঠীৰ মাজত ইয়াত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হোৱাটো আমি নিবিচাৰোঁ আৰু তাৰ কাৰণে অহৰহ আমি চেষ্টা চলাই আছোঁ। আমাৰ সকলো অঞ্চলতে আমি পুলিচ বাহিনী, আৰক্ষী বাহিনী, তাৰপিছত অৰ্ধসামৰিক বাহিনী আমাৰ নিয়োজিত হৈ আছে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো অপশক্তিয়ে যদি ইয়াত কিবা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰতম আইনগত ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে আমি তৎপৰ হৈ আছোঁ। থেংক ইউ ছাৰ। Authorities in Imphal West District have reimposed a curfew starting at 4:30 a.m. on Saturday until further notice due to the prevailing law and order situation in the district. Earlier, the authorities had relaxed the curfew from 5 a.m. to 8 p.m. on November 16th as per an order dated November 15. However, this relaxation order now stands cancelled with immediate effect. Individuals involved in essential services, including healthcare, will be exempt from the curfew. Earlier, Manipur Chief Minister Biren Singh had reportedly called for an emergency meeting amid the unrest in the state. However, following reports of attacks at residence of BJP MLAs, including Chief Minister and Biren Singh's son-in-law, that were attacked by the mob, the meeting was reportedly called off. Meanwhile, internet has also been suspended in the territorial jurisdiction of currently affected districts of Imphal West, Imphal East, Bishnupur, Thoubal, Kakching, Kangpokpi and Churachandpur for 2 days with effect from 5:15 p.m. today. We'll be right back after a short break.
जिसे बनाने में किसी भारतवासी का पसीना बहा हो, उसे खरीदने पर जोर देना चाहिए और ये सबके प्रयास से ही संभव होगा। वोकल फॉर लोकल हमें व्यवहार में लाना ही होगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के वोकल फॉर लोकल के आह्वान से प्रेरित उत्तराखंड सरकार इस दिशा में हर महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। प्रकृति, संस्कृति और विरासत को अपने अंदर समेटे उत्तराखंड में बने प्रोडक्ट एक ब्रांड के रूप में उभरते जा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा ग्रामीण उद्यमियों एवं कृषि उत्पादों को भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार द्वारा लॉन्च किया गया हाउस ऑफ हिमालयास ब्रांड क्षेत्र के प्रामाणिक हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा दे रहा है। वहीं उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जिसे एक दिन में सबसे अधिक 18 GI टैग मिले। ये सभी प्रयास उत्तराखंड सरकार के वोकल फॉर लोकल के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है। लोकल उत्पादों को अपनाकर हम न केवल उत्तराखंड की विरासत को सहेज रहे हैं, बल्कि स्थानीय लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त भी बना रहे हैं। आइए इस त्योहार स्थानीय उत्पादों को अपनाकर उत्तराखंड की प्रगति में अपना योगदान दें और साथ मिलकर एक आत्मनिर्भर और समृद्ध उत्तराखंड बनाएं। Welcome back after the break. Let's continue with the news. The Election Commission of India has sought responses from Congress President Mallikarjun Kharge and the BJP President JP Nadda in the wake of complaints lodged by them against each other amid the ongoing assembly elections in Maharashtra and Jharkhand. The ECI on Saturday shot off 2 separate letters to Kharge and Nadda respectively, asking them to comment on the complaints. The ECI reminded the party leaders of an earlier advisory to them dated May 22, 2024 during the Lok Sabha elections, which asked them to keep a check on star campaigners and leaders so that public decorum is not flouted and MCC is followed in letter and spirit during election campaign. The Congress has complained to the Election Commission of India of ads being placed strategically within Marathi language television serials to promote the Mahayuti campaign. Meanwhile, the BJP alleged that some Muslim bodies are trying to vitiate the poll atmosphere in Maharashtra and Jharkhand by appealing to their community members to vote for the India bloc on the lines of religion and urged the Election Commission and the Supreme Court to take action in the matter. In a major operation against left-wing extremism, 5 Naxalites were killed and 2 security personnel were injured during an intense encounter in the dense forest of Abujmad, located at the Kanker-Narayanpur border in Bastar, Chhattisgarh. The exchange of gunfire followed a search operation initiated by security forces late Friday night. The operation is part of a series of heightened anti-Naxal efforts across Chhattisgarh. Earlier this week, security forces achieved another breakthrough when 3 Naxalites, including a senior platoon commander carrying a bounty of Rs 8 lakh, was killed in an operation in Bijapur district. That operation, conducted by a joint team of the District Reserve Guard, Special Task Force, Central Reserve Police Force and the Elite Cobra Unit, targeted Naxal camps in the forested hills of Rekhapalli, Komathpalli at the tri-junction of Usur, Basaguda, Pamed. Meanwhile, SP Indira Kalyan Elselsa said today in the joint operation of STF and BSF, 2 Jawans were injured who have been shifted to Raipur. At present, their condition is stable and 5 Naxalites
have been killed and their bodies have been recovered. At present, the communication is intermittent, so it is not clear. The operation is still going on. The ongoing operations underscore the government's commitment to countering Naxalism in Bastar, a region long plagued by insurgent violence. Security forces remain on high alert with additional operations anticipated in the coming weeks to secure the area and dismantle remaining Naxal networks. आज नारायणपुर, कांकेर और एसटीएफ, बीएसएफ, दंतेवाड़ा के संयुक्त ऑपरेशन में 2 जवान घायल हुए हैं, जिनको रायपुर शिफ्ट किया गया है। फिलहाल उनकी हालत स्टेबल है और इसमें 5 नक्सली को मारे हैं और उनकी शव बरामद किया गया है। सर, सामान कितना मिला है? अभी फिलहाल कम्युनिकेशन रुक के हो रहा है, तो क्लियर नहीं है। अभी ऑपरेशन जारी है और जानकारी आपको प्रत्यक्ष दिया जाए। नक्सलियों को सर इसमें और बरामद होने की क्या आशंका? अभी ऑपरेशन जारी है, तो बढ़ भी सकता है या नहीं भी बढ़ सकता है। टोटल ज्वाइंट ऑपरेशन था। टोटल हम लोग गए थे 1439 और हमारी जो कांकेर टीम थी 400 के आसपास। कितने बजे मुठभेड़ शुरू हुआ? मुठभेड़ सुबह फर्स्ट लाइट में सुबह 6 बजे से स्टार्ट हुआ, तो वही 11 बजे तक अभी भी जारी है? हाँ, अभी भी जारी है। कितने नक्सली मारे गए हैं उसमें? हाँ, उसमें से तो शायद 5 नक्सली मारे गए हैं। और भी कुछ घायल होने की? हाँ, और भी घायल होने की सूचना है अभी भी। जवान कितने घायल हुए हैं? क्या नाम है? 2 जवान घायल हुए हैं, जिसमें एक जवान हीरामन यादव और एक गाड़ी सर। कहाँ गोली लगी? हाँ, एक जवान के पैर में गोली लगी है, जंघा में, और एक के सिर में। अभी क्या स्थिति है जवानों की? अभी सेफ हैं, ठीक हैं। ठीक। आपका नाम? मेरा नाम टीका। Prime Minister Narendra Modi has embarked on a 5-day visit to Nigeria, Brazil and Guyana today. In his departure statement, the Prime Minister said that this will be his first visit to Nigeria, which is India's close partner in the West African region. Modi noted that his visit will be an opportunity to build upon the strategic partnership, which is based on a shared belief in democracy and pluralism. He also expressed his eagerness to meet the Indian community in Nigeria, as well as the Nigerian people who have sent him welcome messages in Hindi. Modi will also attend the 19th G20 summit as a Troika member. He highlighted that India's successful presidency last year had elevated the G20 to a people's G20 and incorporated the priorities of the Global South into the agenda. Stating that this year Brazil has built upon India's legacy, Mr. Modi expressed his anticipation for meaningful discussions in line with the vision of one Earth, one family, one future. The Prime Minister added that he would also use this opportunity to engage in discussions on furthering bilateral cooperation with several other world leaders. Modi said that his visit to Guyana at the invitation of President Mohammad Irfan Ali will be the first ever visit of an Indian Prime Minister in over 50 years. During the meeting, both leaders will exchange views on giving strategic direction to their unique relationship, which is based on shared heritage, culture and values. Modi will also pay his respects to one of the oldest Indian diasporas who migrated more than 185 years ago and engage a fellow democracy while addressing their parliament. Meanwhile, during this visit, the Prime Minister will also join leaders from the Caribbean partner countries for the second India-CARICOM summit. Mr. Modi said that the summit will enable these countries to renew historical ties and expand cooperation into new domains. We'll be right back after a short break.
Welcome back after the break. Let's continue with the news. At least 10 newborn babies died due to burns and suffocation in a devastating fire in the neonatal intensive care unit of Maharani Lakshmibai Medical College in Uttar Pradesh's Jhansi late on Friday night. Deputy Chief Minister Brijesh Pathak, who reached Jhansi on Saturday morning, said that a total of 49 children were in the ward, which has a capacity of only 18 beds. While the bodies of 7 children have been identified, 3 remain unidentified, he said. Efforts are underway to establish their identities and reach their family members. Brijesh Pathak added and said that 17 other children injured in the fire are currently receiving treatment in the emergency wing of the medical college and various private hospitals, with 7 of them admitted to private facilities. Additional Director General of Police Alok Singh earlier said that 47 infants were admitted to the ward at the time of the incident, adding 10 newborn babies died and 37 were rescued. Meanwhile, Prime Minister Narendra Modi, while expressing his condolence on the death of children, announced an ex gratia of ₹2 lakh from the Prime Minister National Relief Fund for the next of kin of each deceased, and said the local administration under the state government's supervision is making every possible effort for relief and rescue. देखिए, कल शाम की बात है, ये लगभग 10:30 से 11:15 के बीच में एक शॉर्ट सर्किट की वजह से NICU वार्ड, जिसमें न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट कहते हैं जिसे, उसमें आग लग गई और उस वक्त उसमें 49 बच्चे एडमिटेड थे। तो जैसे ही आग लगी तो हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो स्टाफ है, वो उनके रेस्क्यू में लगा और बाद में फायर ब्रिगेड वगैरह भी आई और उसमें से हम लोगों ने 39 जो बच्चे थे उनको रेस्क्यू कर लिया और उसमें 10 बच्चे एक्सपायर हो गए। वर्तमान में जो बच्चे घायल हैं उनकी क्या पोजीशन है? अभी फ़िलहाल जैसे सुबह से मेरे पास जो स्टेटस अभी बज रहा है 9:45, अभी आधे घंटे पहले का मेरे पास स्टेटस ये है कि अभी सारे बच्चे अंडर कंट्रोल हैं, स्टेबल हैं। अच्छा, जो पीड़ित महिलाएं जो परिजन है उनका कहना है कि बच्चे उनको मिल नहीं रहे, जो क्या पोजीशन है? नहीं, एक्चुअली जो अभी डेथ हुई हैं इसमें 3 बच्चे जो हैं वो पहचान में नहीं आ रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग पूरी प्रक्रिया कर रहे हैं ताकि उनका पहचान मिल सके और उनके परिजनों को शव सौंपा जा सके। बड़ा कारण क्या रहा है आग लगने का? जी, आग लगने का कारण नहीं, अब बड़ा या मतलब वैसे कैटेगराइज तो नहीं कर सकते क्योंकि शॉर्ट सर्किट हुआ और क्योंकि उस रूम में सभी बच्चे ऑक्सीजन पे, मोस्टली बच्चे ऑक्सीजन वगैरह पे ही रहते हैं, तो ऐसे में वो स्पार्क फ्लेयर कर गया। जो बच्चे मिसिंग हैं उनके परिजनों का कहना है कि अभी तक हमको बच्चों को जानकारी नहीं मिल रही कि हैं भी कि नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया कि अभी 3 जो बच्चे हैं वो पहचान में नहीं आए हैं, उनकी पहचान के लिए हम लोग प्रक्रिया कर रहे हैं और बाकी जो प्रशासन है ये लगे हुए हैं, सब उनके सबके फ़ोन नंबर्स हम लोगों के पास इन हैंड हैं, उनको ट्रेस किया जा रहा है, उनके लिए हेल्प के लिए लगे हुए हैं। NICU में ये फरवरी में इसका फायर सेफ्टी ऑडिट हुआ था। इसमें फायर विभाग के साथ पूरी तरह से हम लोगों ने इसका ऑडिट किया था। अभी जून माह में हम लोगों ने मॉक ड्रिल भी किया था, जो समय समय पर सरकार के आदेशों के तहत मॉक ड्रिल किया जाता है। लेकिन ये घटना क्यों घटी, कैसे घटी, पूरी जांच रिपोर्ट आने के बाद हम कह पाएंगे। सर, 18 बेड के वार्ड में अभी जो वर्तमान स्थिति है, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, अभी जो वर्तमान स्थिति है, ये अभी 17 जो बच्चे हैं वो हमारे हॉस्पिटल में हमारे पास हैं। 4 वात्सल में प्राइवेट में ले गए हैं, 3 मातृत्व में ले गए हैं, 1 ललितपुर ले गए हैं, 1 मऊरानीपुर ले गए हैं, 6 अपनी माताओं के साथ यहीं पर हैं और 10 बच्चे जो जिनकी दुखद मृत्यु हुई है, उसमें 7 बॉडीज की जो है वो आइडेंटिफिकेशन हो गया है। 3 की शिनाख्त नहीं हो पा रही है, उनके परिजनों से संपर्क करके शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं और 6 परिजनों से अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम मोबाइल नंबर उनके स्विच ऑफ हैं और हम उनके घर के एड्रेस पर
संपर्क करके प्रयास कर रहे हैं कि वो बच्चे कहाँ हैं, उनके बारे में हम जानकारी लें। बोर्ड में 50 से अधिक बच्चे क्यों थे सर? पूरी आर्थिक मदद भी करेंगे, पूरी सरकार इनके साथ है, हर स्थिति में हम परिजनों के साथ खड़े हैं। बच्चों के साथ जो बच्चे अनआइडेंटिफाइड हैं, अगर उनका आइडेंटिफिकेशन समय से नहीं हो पाता तो DNA जांच भी कराएंगे। उसके बाद That is all we have for now. For more news and updates, keep watching Hornbill TV.